Bismillahirrahmanirrahim. Now we're discussing Waiting for Godot MCQs. Waiting for Godot was a play from Theatre of Absurd, and it was written by Samuel Beckett. So Theatre of Absurd was a theatre that was originated with like keeping in mind certain realities of life, जिसमें उनको लगता था कि लोग जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, उन चीज़ों को उस प्ले की फॉर्म में डाला गया. लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि एक नॉर्मल प्ले से इसको डिफरेंट बनाती हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे प्लेस के अंदर जो डायलॉग्स हैं वो इंतहाई छोटे और रिपीटेड होते हैं. डायलॉग्स बार बार रिपीट किया जाता है. फिर इन डायलॉग्स के अलावा प्लॉट जो है वो इसमें कोई बिगनिंग, मिडल एंड क्लैरिटी नहीं होती. यूनिटीज के बारे में हम लीस्ट इन्फॉर्म्ड होते हैं. जो सीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंट रेपिटिशंस होती हैं और उसमें एक नथिंगनेस हमें नजर आती है. सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं absurd plays के. It was originally written in French language. So ये French language में लिखा गया. Didi is nickname of Vladimir. दो main characters हैं Estragon और Vladimir. So Vladimir का nickname Didi है and Godot is nickname of Estragon. Two men, Vladimir and Estragon, meet near a leafless tree. So in scene 1, there is a tree which is leafless. सिर्फ एक ढांचा सा है ट्री का और वहां पे ये दो लोग खड़े हैं. दैट इज द होल स्टेज. बस यही कंप्लीट स्टेज है. Estragon spent the previous night lying in a ditch and receiving a beating from some unnamed assailants. इनको नहीं जानता किसने इसको मारा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मारा और वो पिछली रात एक डिच में गिरा रहा, जख्मी रहा. Now both of them are waiting for Godot. So दोनों apparently एक इंसान का या किसी एक शख्स का, किसी का वेट करें जिसका नाम Godot बताया गया हमें. और this we come to know through their dialogues. They've never seen Godot yet. उन्होंने अभी तक Godot को देखा ही नहीं है. They don't even know के how does he look like. वो है कौन, कैसा लगता है. They're waiting for him because they don't know. उन्हें ये भी नहीं पता कि why are they waiting for Godot. वो इन्हें कुछ आगे कहेगा या ये उससे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मांगेंगे, हम क्यों वेट कर रहे हैं, हम रोज क्यों खड़े होते हैं, Godot कब आएगा. They are absolutely blank. What is Godot going to give them? They're not sure. They're really not sure. उन्हें पता ही नहीं है कि Godot ने आना भी है या नहीं आना, या वो क्या चीज इन्हें देने आ रहा है या इनसे क्या चीज लेने आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ये उसका वेट क्यों कर रहे हैं. They are blank. What is the time for Godot to come? They have no idea practically. उन्हें ये भी नहीं पता कि Godot ने कब आना है. सुबह आना है, दिन को आना है, रात को आना है. They just know that they have to be here and they have to wait for Godot. They talk aimlessly. They exchange hats with each other. They share jokes with each other. They're doing all these things just to kill the time. So that meanwhile they're waiting for Godot. और वेट के दरमियान अपना टाइम पास करने के लिए वो fruitless activities कर रहे हैं, जिसमें से एक कहता है कि चलो हम बोर हो रहे हैं, ऐसा करते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं. तो वो कहता है चलो ये भी अच्छा आइडिया कि फांसी पे लटक जाते हैं. फिर वो एक को कहता है कि तुम पहले फांसी पे लटक जाओ और उसके बाद मैं लटकूंगा. कह रहा है कि तुम या अगर हम दोनों लटकेंगे तो तुम थोड़े से स्ट्रांग हो, रस्सी टूट जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा अगर अकेला लटका. सो दिस इज नॉनसेंसिकल व्हाट दे आर टॉकिंग. Two other characters who show up are Pozzo and his slave Lucky. So दो मजीद characters आते हैं in Act 1 when they're waiting for Godot. तो उसमें एक Pozzo है और एक उसका slave है Lucky. Pozzo is going to market because he wants to sell Lucky. वो Lucky को बेचने जा रहा है.
वो लकी को मार्केट में सेल करने जा रहा है. लकी इज beast of burden. Like, who is actually the beast of burden? So that is Lucky. Lucky beast of burden है, and वो basically हुक्म का गुलाम है. वो पोज़ो का हर हुक्म मानता है. Lucky performs a dance and a monologue. एक speech करता है, monologue करता है, dance performance करके दिखाता है पोज़ो के हुक्म पे. A boy comes in the end of Act 1 and tells that Godot is not coming. Now, this is also repetitious कि वो जो बच्चा आता है और बताता है कि गोडो आज नहीं आ रहा, तो ये उससे पूछते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो कहता नहीं. तुम तो वही हो जो कल आए थे. कहता नहीं, मैं कल नहीं आया. कल भी तुमने आके बताया था कि गोडो नहीं आ रहा. नहीं, वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई था. अच्छा, तुम कौन हो? मैं ये हूं. तुम्हारा भाई कौन था? वो शेफर्ड है. सो दे आर इवन नॉट श्योर कि कल कौन आया था जिसने बताया था कि गोडो नहीं आ रहा, और आज जो ये है, ये डिफरेंट बच्चा है या सेम बच्चा है जो बता रहा है कि गोडो आज भी नहीं आ रहा. There is repetition of dialogues in theater of absurd, like what we do now, we wait for Godot. Let's go, we cannot. Why? We are waiting for Godot. So this keeps repeating. What has happened to Pozzo when he and Lucky return on the second night? So Act 2 में अगली रात को जब ये again wait करें Godot का, so Pozzo or Lucky, they again appear, but this time Pozzo is blind. The change in the setting of Act 2 was a change in leaves merely. Okay, सीन में सिर्फ एक दरख्त था पीछे जो कि leafless था in Act 1. Act 2 में थोड़े से leaves उस पे आ जाते हैं, which may be a symbol of hope. What do Estragon and Vladimir do after deciding to leave at the end of the play? They do nothing. Even at the end of Act 1 and Act 2, when even they come to know that Godot is not coming, they say, okay, let's go, but they do not move. They keep sitting because they're having such an aimless life. Estragon and Vladimir are both tramps. So tramp is a term used for one who is a vagabond, a vagrant, a beggar, इस तरह के लोगों के लिए. In Act 1, Pozzo is master of Lucky. So Act 1 में Pozzo Lucky का master है. In Act 2, Pozzo is depending on Lucky because he's blind and Lucky is leading him. The play exhibits repetition and monotonous in life. कि लाइफ में कितनी monotonous है, कितनी बोरियत हो चुकी है, कितनी यकसानियत हो चुकी है. The boy in Act 1, a local lad, assures Vladimir that this is the first time he has seen him. तो वो कहता है कि पहले मैं नहीं मिला. तुम कैसे कह सकते हो मैं पहले मिला हूं? He confirms that he works for Mr. Godot as a Goatherd. कि वो उसकी बकरियां चराता है और ये उसके लिए काम करता है. और his brother, whom Godot beats, is a shepherd. वो उसकी sheep को चरवाता है. So he says कि मेरा भाई है जो कल आया था तुम्हें बताने कि Godot नहीं आ रहा, वो shepherd है, मैं Goatherd हूं. Godot उसको मारता पीटता भी है. So this is from waiting for Godot. कि जिसमें हम देखते हैं कि even when the Act 2 ends, we come to know that again a boy comes and again he says we have never met before, and again he says that Godot is not coming, he'll be coming tomorrow. Again they're not sure that whether he's to come or not, or why is he coming, or what we will say to him when he comes, what are we going to ask him for, what he is going to give to us. So this is all reflecting the human life, which is full of so many mysteries and so many confusions that we don't know what we are doing or why are we living. So this is not applicable to us because we, being Muslims, we believe in that we should not be hopeless. But there, in that time, the time of theater of absurd, those people were
convinced after world wars that life has become meaningless.